as you already know that in A1, please now stop talking. In A1, we have to study two papers, P1 and P4, as already I told you this on Tuesday. There are two papers, P1 and P4. P1 is your pure mathematics 1, and P4 is your mechanics. So first we will start with pure mathematics 1, P1. Its weightage is 60%, 40% is the weightage for M1 mean paper 4. ये already हम note कर चुके हैं, हमने ये Tuesday को किया था. Total marks for paper 1 are 75 and time allowed will be 1 hour and 50 minutes. Around 11 questions will be there which you have to attempt all of them. Okay, in P1 pure mathematics 1 we will start today, that is 23rd of August, and we will try to end this by December. Or after December we will start paper 4, that is mechanics. If we start P1 pure mathematics 1, I will start with that topic which is basically linked with your O level, that is coordinate geometry. वैसे आप syllabus में देखेंगे तो your coordinate geometry is your third topic, but I want to take a start with that particular topic जिसकी already आपकी basics हैं, और मैं उसी के साथ यहाँ पे bridge करूँगा, इसको link करेंगे. So let's start. The first topic of our P1 is coordinate geometry. Now please, I don't want to say again and again कि you are adult और आपको मैं नहीं चाहता कि 4 या 5 क्लास वाले बच्चों की तरह ट्रीट करूं. डेफिनेटली जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, इफ आई एम स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मैं इसका कुछ ना कुछ रिव्यू जरूर दूंगा जो आपने ओ लेवल में किया है. आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ थोड़ा सा गैप आने की वजह से या कोई भी रीजन हो सकती है कि चीजें आपको भूल सकते हैं आप, तो थोड़ा सा मैं रिव्यू हर टॉपिक का जो आपने ऑलरेडी ओ लेवल में किया उसको करूंगा. बट मेरी एक्सपेक्टेशन यही होंगे कि आपको ओ लेवल की चीजें आती हों. हाँ, कुछ भूली होंगे तो वो रिवाइज हो जाएंगी, लेकिन आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि पूरे का पूरा ओ लेवल यहाँ पे पढ़ा जाएगा. Okay, in coordinate geometry, I want to tell कि almost 70% जब हम 4th क्लास में होते हैं ना, तो दरवाजा खुलता है, सारे हम पीछे देखते हैं क्या हो रहा है, ओए होए होए पता नहीं कौन आ गया. लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर ये चीजें पता है कोई बंदा ही आया यार, क्या करना है उसने, और फिर उसको आंखों से इशारे भी करने, हाँ हाँ ये क्या बात है यार. तो प्लीज जो लेट आ रहे हैं आप ख्याल करें अपना भी और बाकियों का भी, कि आपकी वजह से जब आप एंटर होते हैं तो हमें तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस चाहिए होती हैं, तो आप प्रोवाइड कर देते हैं, तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल है. वो बेशक वो आप सिर्फ 10 सेकंड में इंटर हो जाते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट का एक अपना डिस्ट्रैक्शन लेवल भी है, ये भी मैं आपको बताऊं. कुछ लोग उसको सिर्फ 10 सेकंड तक ही लेंगे और कुछ लोग उसके बारे में 1 मिनट तक सोचते रहेंगे ये लेट क्यों आया, और उस 1 मिनट में कितने कॉन्सेप्ट्स गुजर जाएंगे. सो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि टाइम पे आ जाया करें ताकि आपके फ्रेंड्स डिस्टर्ब ना हों, और सेकेंडली नेक्स्ट टाइम अगर आप लेट आएंगे तो शायद आपको इंटर भी ना होने दिया जाए. ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिव्यू ऑफ योर ओ लेवल. आई वांट टू टेल कि द कॉन्सेप्ट ऑफ coordinate geometry in A level are almost 70 to 80% are similar to your O level. Mean आपका 70 to 80% O level में जो किया वही आपका A level में. Only 20 to 30% there are some new things. Majority concepts are same, but the level of questions will be now difficult. पहले भी आपको equation of line find करनी होती थी. You can find the equation of line.
you can find the coordinates of a particular point. But here you have to do the same things, but this time you will be having some difficult question. The level of questions will be raised now. Okay, first of all, let's make a summary to what we did for this particular chapter in your O level. So starting from the distance, if the two coordinates, I hope everyone know, okay, there is x-axis, y-axis in the places, the values, there's x coordinate and there's y coordinate. If you want to find the distance between 2 points, so let's write the summary. Majority को ये याद होगा, लेकिन कुछ को भूला होगा, और ये सब बार बार यूज होंगे यहाँ पे. So what's the distance formula? Your distance formula is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. If the coordinates of 2 points A and B are given, and if you want to find the distance between A and B, or if you want to find the length of AB, this is a formula to calculate the length of a line segment or distance between 2 points. Then comes the midpoint, G. Do you remember how to find the coordinates of midpoint? Yes. So the coordinates of midpoint, so कोशिश करें जिससे पूछा जाए वही बताएं. मुश्किल काम है जब आपको चीज आती है और आपसे बर्दाश्त उसको करें. मुश्किल काम है वैसे, लेकिन कोशिश की जा सकती है. ऐसा ऐसा ट्रेनिंग हो जाएगी. Okay, if you want to find the coordinates of midpoint, so it's simply you are saying x1 plus x2 over 2, comma y1 plus y2 over 2, and we can say simply average of x coordinate, average of y coordinate. We know how to calculate the average. If there are two things, just add them, divide by 2. If three things, add them, divide by 3. So here you have only two things, x coordinate, one of them, and the other one is having the x coordinate. So it is midpoint is x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2. So the average of x coordinate, average of y coordinate. Then comes the gradient, slope. Gradient slope is the measure of steepness. If you have any straight line, if you want to measure the steepness of that line, so that measure of steepness is called the gradient, the slope. So gradient of a straight line is, usually we represent gradient with m. Yes, Alishpa? It's rise over run. We can say y2 minus y1 over x2 minus x1. Change in y-axis, y coordinate, divided by change in x coordinate. So y2 minus y1 over x2 minus x1, rise over run. Next. Fourth. So we are basically making a summary of all those formulas which we have learned in our O level. So fourth one is equation of straight line. So equation of straight line is, what's the equation of straight line? Y is equal to mx plus c. So if you have a straight line, you can find the equation of that straight line, which is y is equal to mx plus c, where m is gradient of that straight line and c is y-intercept, mean the point on y-axis where the line cuts, that is called y-intercept. Okay, most of you have studied this equation, y is equal to mx plus c. That's the equation of straight line you have done in your O level. हो सकता है आप में से कुछ ने कोई एक और लाइन भी की हो या एड मैथ में आपने की हो,
I'm going to write that other, or the equation of straight line, the other equation of straight line can be y minus y1 is equal to m into x minus x1. So मैंने कहा जैसे कि आप में से कुछ ने मे बी दोज हु आर टेकिंग एड मैथ उन्होंने ये किया, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सिर्फ मैथ में भी ये इक्वेशन की होगी, y minus y1 is equal to m into x minus x1. So but for some of you, most of you भी कह सकते हैं कि ये इक्वेशन आपके लिए न्यू है. So this is a new equation of straight line for you. Y minus y1 is equal to m into x minus x1. So अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा. First I'll complete the summary of this topic. So इस particular equation of straight line को I will discuss at the end of the writing summary. So remember, y minus y1 is equal to m into x minus x1. How to use this equation of straight line to find the equation of straight line, we will discuss after this. Okay, next. Okay, in coordinate geometry, further we know that on x-axis, what's a special thing on x-axis? Is there anything special? Y coordinate is always 0. On x-axis, the coordinates will be 1, it will be 1, 0, 2, 0, 3, 0, it can be minus 1, 0. I mean, x coordinates can be anything, but y coordinate will always be 0. So अगर आप इसको देखें, अगर किसी को ये बात clear नहीं है, normally तो you did this in your 7th class. If I want to label this particular point, so what are the coordinates of this point? X is 1, y is 0. What are the coordinates of this point? X is 2, y is 0. Here, x is minus 1, y is 0. See, on x-axis, all the y coordinates are 0. And if I talk about y-axis now, what are the coordinates of this particular point? X coordinate is 0 and y coordinate is 1. X coordinate is 0, y coordinate is 2. X coordinate is 0, y coordinate is 3. So the important thing is, on x-axis, your y coordinate is always 0, and on y-axis, your x coordinate is always 0. So the 5th point we can write, on x-axis, your x coordinate can be anything, but y coordinate will always be 0. And on y-axis, your x coordinate is 0, y coordinate can be anything, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, कुछ भी हो सकता है. So these are also common things you did in your O level. Okay, next. Seventh point. If two lines are parallel, for two parallel lines, I hope you understand what are the parallel lines. These are the two parallel lines. If you extend these lines, they will never meet each other. So what do we know about these parallel lines? Their gradients are equal. If I say the gradient of this one is m1, and the gradient of this line is m2, then the gradients of these two are equal. m1 is equal to m2. For two parallel lines, the gradients are equal. Next, for two perpendicular lines, what are perpendicular lines? The lines, those two lines which intersect each other at 90 degree.
if this angle is 90, if I say gradient of one of the line is m1 and the gradient of other line is m2, then what do we know about their gradients? The product of these two gradients will be -1, mean m1 times m2 is equal to -1. If two lines are perpendicular, if you multiply their gradients, your answer will always be -1. Or we can write this thing in another way. We can write it like m1 is equal to, if you shift m2 on the other side, it will be -1 over m2. m1 is equal to -1 over 2. So how do we use this thing? Mean gradient of one line is negative reciprocal of other. If I tell you that the two lines are perpendicular, if I tell you that two lines are perpendicular and the gradient of one line is 2/3, so what will be the gradient of the other line? If they are perpendicular, then the gradient will be negative reciprocal. Negative reciprocal means sign will change here. So positive will become negative. And take the reciprocal. What's the reciprocal of 2/3? 3/2. If I tell you the gradient of one line is 2, what will be the gradient of the line which is perpendicular to that? It will be reciprocal and sign change minus, and the reciprocal of 2 is 1/2, so it will be -1/2. If we have the gradient of one line as -2/7, the gradient of the line which is perpendicular to that will be positive 7/2. If the gradient of one line is -3, sign change positive, and the reciprocal 3 is 1/3. And if the gradient of one line is 1/5, what will be the gradient of the other line? Minus, and the reciprocal of 1/5 is 5. If the gradient of one line is 1, the other will have negative, and the reciprocal of 1 is also 1. So the reciprocal, negative reciprocal of 1 is -1. So this is for perpendicular, but if the lines are parallel, the gradients will be equal. So these are the 8 points. Next. Okay, next is if two lines are intersecting at a point, just listen to me. If two lines are intersecting at a point, if I ask you to find the point of intersection, how will you find them? Yes. Solve them simultaneously in simple words. See, aapne equations, if you have an equation like x plus 2y is equal to 3, x plus 2y is equal to 3, and the other equation say maybe 2x minus 5y is equal to 7. You can solve these two equations simultaneously. Kis class mein ki thi ye? Grade 8. So grade 8 mein D2 chapter number 5, you did the equations, simultaneous linear equations. आप simultaneous linear equation को solve करते थे तो आपके पास एक x का आंसर आता था और एक y का आंसर. सपोज करता हूं, मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर आता है. So the answer of x is 2 and the answer of y is 1. In grade 8, you know how to solve the simultaneous equation. जब आप solve करते थे तो आंसर आता था एमज़िया. ये आंसर क्या रिप्रेजेंट करता था जी? ये बातें अगर नहीं समझेंगे तो P1 नहीं होगी. अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैंने कहा था इजी है, तो बिल्कुल इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स लेके चलेंगे तो इजी है. अगर यही समझेंगे कि हमें तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का था, हमें कहा गया था x फाइंड करो y कर दो, हमने फाइंड कर दिया, पता ही नहीं है x क्या और y क्या. सो इफ आई टॉक अबाउट द graphical interpretation of this answer,
So the graphical interpretation is x plus 2y is equal to 3 is a linear equation. 2x minus 5y is equal to 7 is also a linear equation. On xy plane, the graph of linear equation is always a straight line. So अगर एक की straight line कुछ ऐसे बनती है and the other one is like this, so both the lines are intersecting at a point. So this is their point of intersection, this one. When you solve the equations of these two straight lines simultaneously, वो जो आपके पास आंसर आता है x coordinate और y coordinate, that is basically the point of intersection of these two lines. So अब अगर इनका आंसर वाकई यही है 2 and 1, so it means this is x coordinate is 2 and here the y coordinate is 1. So the point of intersection, x coordinate is 2 and y coordinate is 1. So in grade 8, we did the simultaneous equation. So what is the graphical interpretation of the answer? It means it gives you the point of intersection of those two lines. So if the question is to find the point of intersection, so what do we have to do? We have to solve those two equations simultaneously. So जब भी आप simultaneous equations को solve करेंगे, जो answer आएगा वो उनका point of intersection होगा. So the next point is to find the point of intersection. आपको लग रहा है कि सारे पॉइंट्स बहुत सारा सिंपल हैं और यही सब यूज होंगे, इससे बाद कोई चीज नहीं होगी, लेकिन इन्हीं में ही प्रॉब्लम्स आएंगे. To find the point of intersection of two lines, solve the equations of the lines simultaneously. If you want to find the point of intersection of two lines, simply solve the equations of the lines simultaneously. ठीक हो गया? उनको simultaneously solve करेंगे तो आपके पास point of intersection आ जाएगा. Okay, next, sorry. Quadratic भी करेंगे, टेंशन नहीं लेनी. Quadratic भी आएगा, non quadratic, non linear भी आएंगे. So method यही होगा, parallel so देखेंगे. अभी तो हम सिर्फ linear की बात कर रहे हैं. Okay. After this, next important point of this chapter is, ये जितने भी हम पॉइंट लिख रहे हैं हम इन सबको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, बट पहले मैं आपको एक समरी देना चाहता हूँ. इसमें से मेजॉरिटी चीजें ऐसी हैं जो कि आपने की हुई हैं, अब ये भी किया हुआ था आपको, लेकिन शायद आप में से किसी को ये नहीं पता था कि सॉल्व करने से जो आंसर आता था वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था. ओके, नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. What is a perpendicular bisector? Good. Perpendicular bisector. पहली बात, perpendicular क्या होती है? क्या होता है? Two भी lines, कोई भी two lines intersect करें at 90 degrees, so they are perpendicular. I am going to discuss perpendicular separately और bisector separately. Perpendicular का तो आपको पता चल गया. You please see here these two lines, if they are making an angle of 90 degrees, so it means they are perpendicular. Okay, what is bisector? Bisector is a line, simply I'm talking about bisector. Bisector is a line which divides the given line into two equal parts. For example, if I say this is a line segment AB whose length is 4 centimeter. अगर एक लाइन जो कि मैं ग्रीन कलर में ड्रॉ करूं, जो कि इसके मिड पॉइंट से पास करे, see this line is passing through the midpoint of AB, and this line dividing the given line AB into two equal parts,
2 centimeter, 2 centimeter. So this line L, if I name this line as L, उठ जाए यहाँ से, जल्दी से लास्ट ईयर पे चले. So this line is the bisector of AB. Why it is bisector? It is dividing the given line into two equal parts. तो ये bisector है. This one is perpendicular. This is bisector. Here this line is perpendicular and this one is bisector. So what will be the perpendicular bisector? एक ऐसी line होगी जिसमें ये दोनों qualities होंगी. Mean perpendicular भी होगा और bisector भी होगा. For example, if I say this is a line AB और एक ऐसी line which is 90 degree, making an angle of 90 degree with AB, and also dividing the AB line segment AB into two equal parts. अगर ये भी 2 centimeter है, this is also 2 centimeter. So it means this line L is bisector, and also line L is perpendicular to that. So we can say the line L is perpendicular bisector. So bisector mean it is this line is passing through the midpoint, and perpendicular mean it is making an angle of 90 degree. So let's write here perpendicular bisector. Just make a diagram here, जिससे आपको अपने लिए समझने की आसानी होगी. Say this is a line AB. This line L, which is making an angle of 90 degree and dividing the line segment AB into two equal parts. कट बाग क्या शो कर रहे हैं कि दोनों पार्ट्स इक्वल हैं. जब इक्वल है तो पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर. सो हियर यू कैन से लाइन L is perpendicular bisector of AB. Line L is perpendicular bisector of AB because it is passing through the midpoint of AB and intersecting the line AB at 90 degree. This is a perpendicular bisector. Next and last, sorry, ये वाला साइन इसकी बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर का सिर्फ हो जाता है, बाइसेक्टर का नहीं होता. ओके नेक्स्ट. एंड अभी तक भी अगर देखा जाए तो 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स आपके लिए ज्यादा चीजें अभी तक नई नहीं है. लास्ट पॉइंट में लिखूंगा, दिस विल बी न्यू फॉर यू. You haven't studied the equation of circle in O level. Circle you have studied. Circle में आपने क्या क्या पढ़ा है? You did the mensuration of circle. You know the radius, you know diameter. आपको center उसका होता है. Circumference is 2 pi r. Area of the circle is pi r square. You did the area of sector, x degree over 360 into pi r square. You did the arc length of sector. बट जिस तरह आपने लाइन की इक्वेशन की थी, लाइन की इक्वेशन, यू डिड द इक्वेशन ऑफ लाइन, यू डिड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द क्वाड्रेटिक फंक्शंस, you know the equations of cubic functions. But here in coordinate geometry, the new thing that is the 11th point will be the equation of circle. So equation of circle is x minus h square plus y minus k whole square is equal to r square. X minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. If I make a circle here,
in this given equation, H, K are the coordinates of the center. And R is the radius. So if I label this in your diagram, this H, this is H, this is K. So your X coordinate is H, Y coordinate is K. This is the coordinate. These are the coordinates of center. And this one, this is called radius. So this last point is new for you. Yes. Sorry. No, X and Y is not the X and Y. जहाँ पे जो X है वो आपका coordinate नहीं है. आपकी जिससे y is equal to mx plus c में x और y आता है, ये x और y वो वाला है. आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2x plus 3y is equal to 7 और y is equal to 3x plus 7. If you write y is equal to 3x plus 7, ये y और x तो कुछ नहीं रिप्रेजेंट करते. These are the points on that line. ये 3 कुछ रिप्रेजेंट करता है ग्रेडियंट को, ये 7 कुछ रिप्रेजेंट करता है किसको, y इंटरसेप्ट को. So this x and this y, they are representing all the points on the circle, but this h and k are the particularly the coordinates of the center and radius of the circle. अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, इसको डिटेल में मैं करूंगा डिस्कस. अभी हम क्या करेंगे, I have completed the whole summary of this topic. So almost आप देखेंगे 11 points हैं. अगर कुछ मिस हुआ तो हमको ऐड करना हो तो कर लेंगे, but I think complete हो गया. अब हम if we go back तो हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या चीज इसमें नहीं है. अगर आप देखें तो आपका पॉइंट नंबर 4 in which the equation of straight line, point number 4, equation of straight line y minus y1 is equal to m into x minus x1, that might be a new for you. And then the 11th point. So अभी मैं इस particular point को पहले डिस्कस करता हूं जो 4th में हमने फाइंड किया है. Okay, now some examples of, मैं कुछ ऐसे करूंगा जिसमें काफी चीजें डिस्कस हो जाएं. Now let's start the examples जिसमें ये काफी कुछ आ जाएगा. If we have a point A 3 5 and the point B 8 7, if I ask you to find the distance between A and B, जल्दी से please find करें. Now just the practice of all those concepts जो कि पीछे हमने लिखे हैं, जल्दी से. Distance between A and B. So the distance will be, the formula is the first one, x2 minus x1 whole square. So 8 minus 3 square. Y2 minus y1 whole square, 7 minus 5 whole square is equal to 5 square is 25, 2 square is 4. So it is square root 29. Take to 3 significant, it will be 5 point. Take to 3 significant figure, 5.39. So if the requirement of the question is to write exact answer, then in that case you will write square root 29. That's the exact answer. But if this is not so, तो आप फिर 3 significant figure में answer देंगे. Okay, next is write the coordinates of the midpoint of A and B. So the coordinates of midpoint is the average of x coordinates. So 3 plus 8 over 2, and the average of y coordinate means 5 plus 7 over 2. 3 plus 8 is 11, 11 over 2. We can write 5.5. And 5 plus 7, 12, 12 over 2 is 6. So these are the coordinates of the midpoint of A and B. Next is gradient.
if the question is find the gradient of the line passing through A and B. So A और B से जो line pass करेगी उसका gradient find करना है. So the gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1, 7 minus 5 over 8 minus 3, y2 minus y1, x2 minus x1. So the gradient is 2 by 5. This is the gradient of the line passing through A and B. Now next is equation of straight line. Okay, मैं next page पे equation of straight line करूँगा. A35. Yes, Shahud. If you want to ask any question, raise your hand. How can it be the gradient of the line passing through AB? Why not? Oh my God. Okay, see here, Shahud. If I say here is point A35, here is the point B, which is 87. अगर मैं कहूं कि आप AB लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करें, ये प्लीज सामने देखें. If I ask you to find the gradient of this line AB, so you can find that by using the same formula. And if I ask you the same line, एक और line है which is passing through A and B, so क्या पहले वाली line और इस line की क्या steepness different होगी? Both are having the same steepness. Same steepness means same gradient. So gradient of straight line AB and passing through A and B will be same. Okay, next is, okay, I am writing A35B87 again here. और gradient आपके पास आ गया है 2 by 5. Now please सुनिएगा important बात. We have to find the equation of the line AB or the equation of a line passing through A and B. एक ही बात है. So equation of line. So पहले तो मैं equation of line उस तरह करूंगा जिस तरह आप O level में करते रहें. जरा देखिएगा. Normally हम कैसे करते हैं? First we need to find the gradient. We know the equation of straight line is y is equal to mx plus c. That's the equation of straight line, where m is a gradient. So अगर आपने gradient नहीं find किया तो पहले gradient find करेंगे. But here in this particular question, already in third part we have calculated the gradient. Now the only thing we need to find is this c. So m और c find करे थे, m हमने third part में किया. Now we want to find the c. C mean y intercept. So who will tell me कि आप कैसे find करते होते थे c? We will use the gradient 2 by 5 in this formula and also one of the coordinate on that line. उस line पे आपको कोई एक coordinate पता होना चाहिए. But you have two. You can use any one of them. So equation of straight line in that way, it will be y is equal to the gradient is 2 by 5. पहले मैं वो सिर्फ copy कर रहा हूँ. I'm just putting the gradient. To find the coordinates of C, we need to plug any one coordinate, any one point on that line. So A or B that उसी line पे हैं. So A अगर put करें, you can use either A or B. It's up to you. Say I'm using A, x3, y5. So x3, y5. So let's do the calculation. 5 is equal to 6 by 5. अक्सर लोगों की इसकी कैलकुलेशन भी नहीं भूल चुके हैं. वो क्या करेंगे, 5 उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स 5 25 और 6 उधर माइनस करेंगे. अभी नहीं करें, काफी लोग करेंगे. नहीं ये मैं कैसे कर सकता हूँ, इतना वीक तो नहीं है मेरा मैथ. ऐसा ही है ना? क्या उधर 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम? या तो एलसीएम लेना पड़ेगा या कंप्लीट 6 by 5 उधर शिफ्ट कर दें. So 5 minus 6 by 5. So you will get the value of C. So what's the LCM? LCM is 5. 25 minus 6. So what is C?
your C is 19 by 5. So we have calculated C. Is that our answer? Yes. No. The question was to write the equation of straight line A1. Answer mark नहीं मिलेगा. उसने कहा था इक्वेशन ऑफ, आपने m फाइंड कर दिया, c फाइंड किया. आप में से मेजॉरिटी वो लेवल में तो ऐसे ही करते थे, m फाइंड कर लिया, c फाइंड किया, जॉब इज डन. बट ऐसा नहीं है. So you need to write the final answer. It is y is equal to 2 by 5x, y is equal to mx, plus c is 19 by 5. So this is your required equation of straight line. So that was the method you were using in your O level. Okay, further इसको extend कर सकते हैं. If the question is, अगर वो कहता है कि write your answer in this form, ax plus by is equal to c, अगर इस फॉर्म में कहता है आंसर लिखें, and say saying कि without having fractions. एक बात, डेसिमल में कैलकुलेशन नहीं करनी है आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, कभी भी नहीं करनी. हमने फ्रैक्शंस कर सकते हैं लेकिन डेसिमल में नहीं. जैसे मैंने आपने ग्रेडियंट 2/5 आया तो उसको डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना. Okay, now my question is कि after having this equation y is equal to 2 by 5x plus 19 by 5, you did this in your O level. If I ask you to write your equation in that particular form, this one, ax plus by is equal to c, so how will you write that in that form? आप क्या करें, LCM ले लें इसका. LCM is 5, 2x plus 19. Now multiply 5 on the other side. 5y is equal to 2x plus 19. और अगर फर्दर x टर्म को भी उधर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी -2x plus 5y is equal to 19. So that is the required form. आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहां कंप्लीट हो चुकी थी. But if the requirement of the question is to write your answer in this form, you will write that in this form. और ये मोस्टली आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा. उसकी रीजन, आपको पेपर में हो सकता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सिंपलीफाई ना करनी हो, आपको आगे उसी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को किसी और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके शायद आगे वर्किंग भी चाहिए हो. तो मुझे ये बताइए, अगर आपको ये पता हो कि इस इक्वेशन को फर्दर आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो क्या ये वाली फॉर्म आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना इजी होगी या लास्ट वाली? लास्ट वाली. ठीक है, टाइम विल टेल. ठीक हो गया. जब फ्रैक्शन हो जाएंगी तो आपकी सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है. ओके, अभी इवन देन, बट आपको ये फॉर्म लानी आनी चाहिए. समटाइम्स क्वेश्चन में मेंशन कर देगा जी कि उससे भी कर सकते हैं. बट मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं. अगर आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ यू कैन लीव अप टिल हियर. बट इफ द क्वेश्चन इज टू राइट योर आंसर इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म, तो ax plus by is equal to c वाली फॉर्म आप लेके आएंगे. ओके, सो ये वो मेथड था जो ऑलरेडी आप ओ लेवल में करते थे. नाउ आई वांट टू यूज this new method, this one, which is the fourth point, y minus y1 is equal to m into x minus x1. How to use this particular method to find the equation of straight line? So both are equally valid. आप जो चाहे मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन जरा सेकंड मेथड आप समझ लें, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कौन सा करना चाहिए, वो एक अलग बात होगी. See here, now I'm going to find the equation of that straight line with that method, and that method is equation of straight line y minus y1 is equal to m into x minus x1. Whether you are using that previous method or this method, दोनों के लिए you need gradient first. आपने पहले इसके लिए भी फाइंड किया हुआ था m, और इसके लिए भी फाइंड किया हुआ है. तो आप क्या करेंगे, just put the gradient here 2 by 5. Now what about this x1 and y1? इस x1 और y1 में put any one point, either a or b. Say I'm using a. जी प्लीज सुनिएगा अच्छी तरह. I'm using a. So a mean x or y will stay as it is. So y as it is minus y1 is 5. This one. I'm using the point a.
So x minus x1 is 3. So what I did here in this equation, I used the value of gradient, and x1 और y1 में I have used any one point, either a or b, जिससे वहां पे भी c find करने के लिए करते थे. So this is your required equation of straight line. बन गई है. थोड़ी सी सिंप्लीफाई करते हैं, हम लाते हैं कि उसके इक्वल है भी या नहीं. इसको बेहतर क्या है कि इसको कैसे आगे सिंप्लीफाई करना है. बेहतर ये कि इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करें और इस 5 को मल्टीप्लाई ऑन द अदर साइड टू मेक योर कैलकुलेशन इजी. जो 2 मल्टीप्लाई उधर ही मल्टीप्लाई करें, जो डिवाइड हो रहा है उसको इस तरह मल्टीप्लाई करें. सो 5 into y इज 5y minus 25 is equal to 2x minus 6. To make that form ax plus by is equal to c, keep all the terms of x and y on left. So a x वाली term अगर मैं left पे लेके आऊं, तो it will be minus 2x. Already there is 5y, and shift minus 25 on the other side. So minus 6 plus 25 is 19. So this is the required equation of straight line. वहां पे भी यही फाइंड की थी. If your calculation is correct, आंसर दोनों से एक ही आएगा. So which one is better? The second one. यहाँ पे in A level now it's important कि आप अपना टाइम भी सेव करें. आपको O level में एटलीस्ट टाइम का इश्यू नहीं होता था. अगर आपको सब क्वेश्चंस आते थे, अगर आपका 2 hours and 30 minutes का पेपर था, तो आप में से काफी लोग 2 hours 2 hour 10 minutes में कर लेते थे. बट यहाँ पे ये भी होगा कि आपका टाइम कंस्ट्रेंट भी होगा. यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल 11 क्वेश्चंस विद इन द लिमिट ऑफ 1 hour and 50 minutes. अगर आप में से कोई अच्छा स्टूडेंट है और वो सब उसको क्वेश्चंस आते हैं, बहुत जल्दी भी वो कर लेगा, तो 1 hour 45 minutes में कर लेगा. सो मैं टाइम कंस्ट्रेंट भी से, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे वो मेथड, दोनों मेथड इक्वली एप्लीकेबल हैं. आप जो मेथड यूज करना चाहें कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि सेकंड मेथड यूज करें. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. इधर क्या हो रहा है? This is almost 5 minutes. अच्छा, ये साथ ही है. Okay, now you have to use the second method, the new method, to find the equation of straight line. Find the equation of a line passing through -1 3 2 7. And don't tell the answer. आपसे मैं पूछूंगा किसी एक से. Your answer should be of the form, in the form ax plus by is equal to c. I need the form ax plus by is equal to c. हमने ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स डिस्कस कर लिए एक्सेप्ट द लास्ट पॉइंट, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, उसको भी हमने डिस्कस नहीं किया. वो हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे. उसके अलावा बाकी सब हम कर चुके हैं. अब इन्हीं की हम कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे. So first you will find the equation of straight line. Sorry, first you will find the gradient of straight line. What's the gradient? 5/3. No. ये जल्दी, ओवर कॉन्फिडेंस, ये बहुत सी चीजें जो कि बहुत से फैक्टर्स है जो कि हमें यहाँ पे इफेक्ट करेंगे. So 7 minus 3 is 4 and 2 minus 1 is 3. So gradient is 4/3. Gradient 4/3. Now equation of straight line y minus y1 is equal to m into x minus x1. So
यूज एनी वन पॉइंट, अगर कोई -1 3 यूज करता है तो भी ठीक है, आंसर एक ही जैसे आएंगे, 2 7 से भी और -1 3 से भी. If I use -1 3, so y -3, gradient is 4/3, x minus -1, so x plus 1. X plus 1 कैसे बन गया? I hope you understand that. Multiply 3 here and 4 here. So it will be 3y minus 9 is equal to 4x plus 4. So your final answer minus 4x plus 3y is equal to 13. अगर किसी का आंसर positive 4x, negative 3y, negative 13 आ रहा है तो that is also correct. सिर्फ माइनस पूरी इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या कॉमन ले लें वो वाली बात है. सो बिफोर कमिंग टुमारो जस्ट रिवाइज ऑल दीज फॉर्मूलाज, क्योंकि कल आप आएंगे तो पहले मैं आपसे फॉर्मूला सुनूंगा. थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज. यस.